Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. This is your दोस्त and your host Ankita. So आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, it's quite interesting. At the same time, it is something which I have lived on. So आज का जो टॉपिक है वो है PhD. बहुत से लोग हैं जो PhD करना चाहते हैं या फिर जो सोचते हैं कि कभी ना कभी लाइफ में इस दौर से भी गुजरेंगे. सो मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मेरी लर्निंग्स की पीएचडी करते करते मेरी क्या लर्निंग्स रही है, प्लस आप कैसे इनरोल कर सकते हो अपने आप को पीएचडी प्रोग्राम में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपको लगता है कि आपको एक ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देगी आपकी पीएचडी में. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट थिंग, बिफोर discussing anything, I would request or I would want you to understand ki why you want to do PhD. If you got this answer why you want to do PhD, then things will be quite easy. Because जब हम PhD करते हैं हमारे दिमाग में होता है कि यार हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, सोसाइटी खुश हो जाएगी, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, ये वो. बट आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड थिंक why you want to do, because you want to do, or it is because other want you to do certain kind of thing which is not right. Second thing is that you all need to understand that PhD is a rigorous journey. बहुत ही ज़्यादा ups and downs रहते हैं, और हम कहते भी है PhD में अगर आप एक बार भी नहीं रोए तो आपने क्या PhD की. PhD में आप रोते हो, हंसते हो, you get frustrated, you get irritated over small things, बिकॉज देर सो मेनी थिंग्स. बिकॉज लोग पूछते रहते हैं कब PhD हो रही है, रिश्तेदार पूछेंगे, आप अगर कहीं जॉब करते तो आपके कलीग्स पूछेंगे, आपके साथ जो आपके बैचमेट्स है वो पूछते हैं कि तेरी PhD कब हो रही है, मेरी हो गई, ये वो बहुत सी चीज़ें चलती है. सो यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ जर्नी एज वेल. आई अग्री कि PhD करने के बाद यू really got a position in the society because everyone see you in a different manner. Because after PhD it is believed that ये बंदा कोई तोप है, right? So ऐसा बिलीव किया जाता है. सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी बिफोर एंटरिंग और बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग PhD, राइट? बिकॉज ये कोई प्रिंसेस स्टोरी लैंड तो नहीं चलेगा. अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, अच्छे मोमेंट्स, बुरे मोमेंट्स सब होंगे, किसी की जल्दी होगी, किसी की लेट होगी. बट प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दैट PhD इज योर ओन जर्नी. यू कैन नॉट कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स जर्नी. बिकॉज मेरी जब PhD हुई थी, मुझसे पहले मेरे एक जो क्लासमेट या बैचमेट बोल सकते हो, उनकी हो गई थी. आई फेल्ट कि यार मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज वो तावलापन बहुत ज़्यादा होता है. देन माई गाइड सेड कि सबकी अपनी जर्नी है, इट विल टेक टाइम. यू might have not done things which he or she have already done, so it will take time, right? अब बात करते हैं enrollment की. How I enrolled. So I was surfing online कि PhD की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट वांट टू गो आउटसाइड हिमाचल. सो one of the most important priority for me was कि मैं हिमाचल में ही यूनिवर्सिटीज़ देखूं. आप अपने हिसाब से, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सो आपके लिए पूरी दुनिया खुली है, नॉट जस्ट इंडिया, अब्रॉड एज वेल. सो व्हाइल आई वाज सर्चिंग, आई थॉट ओवर कि कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे ROI देगी, विच आई ऑलवेज बिलीव एंड विच आई कीप ऑन सेइंग टू माई स्टूडेंट्स एज वेल. ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दैट कि अगर मैं अपना पैसा और अपना टाइम और अपना नॉलेज इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या मुझे जहाँ पे मैं ये सब चीज़ इन्वेस्ट करी, वो यूनिवर्सिटी मुझे इसके बदले उस लेवल की रिसर्च और उस लेवल के इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगी या नहीं करवाएंगी. सो ये सारी चीज़ें थी मेरे दिमाग में. So when I was thinking about that thing, I had only two options in my mind, to be very honest. One was Shoolini University. Not just I'm working there, but truly I really wanted to be part of Shoolini because of its NIRF ranking and all the other things. Along with all my friends were part of Shoolini because they were doing MBA. So मैंने अपने MBA टाइम में Shoolini भी एक्सप्लोर किया था. So I thought that it is one of the great university, and obviously second is the state university HPU.
HPU में I didn't apply after some time because I thought it will be again a very rigorous exercise, and somehow I skipped the deadline. Let's be honest, let's just fake it out. मैं deadline ही cross कर चुकी थी. उसका form निकलना था मई में and I was searching on June July, but thankfully मैंने Shoolini के लिए I applied on February. I keep on calling my guide because at that moment he was not my guide. He was one of my professors from non-university, because after retirement he got a job in Shoolini called him. So he was there. So I had his number. I kept on calling कि sir कब निकल रही है, कब निकल रही है, कब निकल रही है seats. So sir said कि around April May में निकलेंगी seats. So I applied. And I again kept on calling them ki when you are going to have interview, tell me. And in sab cheezon mein, one of the important things that I didn't realize was my option, or what I say, my reason of joining PhD program, because at that moment my only reason was to not get married. Like most of the people का ये reason होता है कोई भी चीज़ करने का. मेरा यही था कि I don't want to get married too early, so I thought PhD को एक shot दिया जाए, and neither I wanted to go outside for my jobs because of my health issues. So that was one of the reason. Then when I was applying for Shoolini, they asked me कि आप जो आगे जाकर अपना टॉपिक लेना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो आई वॉज टोटली ब्लैंक. आई वॉज नॉट अवेयर दैट क्या होता है, बट people over there were very generous, so they told me that what exactly and how exactly I'm supposed to write the research proposal, right? So research proposal में आप क्या करते हो, आप research proposal में आप जिस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो आप उसके बारे में जो कमिटी होती है उनको बताते हो दैट दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, एंड आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो कि प्रीवियसली इस पे क्या काम हुआ था, आप इस पे थोड़ा बहुत क्या एड ऑन करना चाहते हो, और जो आप एड ऑन करना चाहते हो उनको आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कहते हो. कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड ऑन विमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स, सो व्हेन आई सेड कि मैंने विमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स लिए थे, तो मैंने ये कहा कि अच्छा मैंने विमेन ओरिएंटेड टॉपिक लिया है, बट इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं एम्प्लॉयबिलिटी पे देखूँ कि कैसे विमेन की एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या रीजंस है, ये सारी चीज़ें मेरे ऑब्जेक्टिव्स बन गए थे. एंड जो मैंने प्रीवियस लोगों की स्टडीज़ की थी वो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर बन गया था कि ये बेस है जिसके ऊपर मैं कह रही हूँ कि मेरी स्टडी भी कुछ add on करेगी. Most important thing that while preparing your research proposal is that you need to think about कि इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज एट द एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन is the society, because आप society से कुछ ले रहे हो, like the resources and things like this, so you need to think about society as well, that what you are going to give back to the society as well. So ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया गया था कि आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड ऑन करनी है. सो ये सारी चीज़ों से मैंने अपना एक रिसर्च प्रपोजल क्रिएट किया. आई एम प्रिटी श्योर कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं था और बहुत ही ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बट पीपल ओवर देयर वर वेरी generous. They understood कि पहली बार रिसर्च करें, because when we do our graduation, post graduation, and trust me, it's not me, हम सब ऐसे ही हवा में ही सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड ऑल कर देते. वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू PhD, trust me on this, focus on the research projects that has been given to you in your undergrad or your postgrad level, because there you will get to know कि कैसे रिसर्च होता है. बिकॉज रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी आप वही करते हो कि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो एंड ऑल दीज काइंड ऑफ अ थिंग, राइट. सो इस तरह से मैंने एक रिसर्च प्रपोजल तैयार किया, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग माई रिसर्च प्रपोजल I send it to the committee that this is my research proposal and this is what I want to do in my PhD. So मेरा फिर interview schedule हुआ. That is a protocol. First I have before I start with the interview thing, first I have given the university entrance exam. So there are two options. One is you need to either you are a NET or SET, that is National Eligibility Test and State Eligibility Test. If you have
if you have done it and you have been awarded that you have passed both or either one of these, then you will be exempted. If not, then आपके जो यूनिवर्सिटी जहाँ आपने अप्लाई किया है वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है, ठीक है. एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चन एयर टाइप होता है कि आपको आपका जिस एरिया में, जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हूँ, सो ह्यूमन रिसोर्स की मुझे नॉलेज है और मैनेजमेंट एज अ होल का मुझे कितना पता है, बिकॉज एमबीए में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं. मार्केटिंग का भी थोड़ा थोड़ा, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एनालिटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स समहाउ हमने पढ़ ली होती है. सो पीएचडी का जो एंट्रेंस है वो भी थोड़ा बहुत ऐसा, थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन से समराइज होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च से ओरिएंटेड होता है. So I did that. I have given the exam in the morning. In the evening, I was called for the interview. मेरे पैनल में 6 to 7 सीनियर प्रोफेसर्स थे, सब प्रोफेसर लेवल के लोग थे. वो लोग सब बैठे थे and they had my CV as well as they had the copy of my research proposal. I was, to be very honest, I was little not rude, arrogant. I would say I was arrogant because I was like कि नहीं होगा, देख लेंगे. उनको I was making this belief, but in my heart I was like कि बस हो जाए, please हो जाए. I cannot do or I cannot waste my year. And so then they started the questions like ये है वो है, क्या करना है, और टाइप्स के जो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे. And it took around like 1.5 hours, like 1.5-2 घंटे में मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ. देन वी वर आस्क्ड टू सिट आउटसाइड बिकॉज सब लोगों का एक एक करके वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे. उसके बाद व्हाट हैपेंड, they come up with the list that how many people are selected and how many of them are in waited list. Because what happened, every university get limited number of seats for PhD. It's not like कि वो 100 लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है. तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं और वो उन्हीं सीट्स के अकॉर्डिंग लोगों को ले सकते हैं जो फर्दर डिवाइडेड होती हैं फॉर रिजर्व कोटाज एज वेल. वो रिजर्व भी होती हैं, उसमें सारी सीट्स होती हैं. सो इस तरह से मेरा जो है पीएचडी का इंटरव्यू हुआ था इन शुलिनी. सो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, आई एम कमिंग बैक, मैं इधर उधर काफ़ी जा रही हूँ. सो क्योंकि it's been like 4 years now, 4.5 years now that I have been into that phase of like question answer round. So what happened, then they asked me questions about my personal life, not personal life कि कौन है आपकी लाइफ में, all this, no. When I say personal life, like introduction kind of, they wanted to understand that what kind of a human being or as a person I am, because there were people from the HR, so they were understanding the psychology of me. And then there were people from the marketing, from all the disciplines of management itself. There were all the people sitting over there. So they started asking me questions. Initially the questions were very normal, or I can say casual kind of a questions कि शिमला में कहाँ से हो, अच्छा schooling वहाँ से है, then they first, now let me tell you why did they ask such questions. Because they wanted to make me at ease, कि I should be like feel comfortable while giving the interview. Then they started with the other questions, set of questions about the subject content or subject content, I can say. Then they asked me about कि ये definitions management की क्या होती है. मैंने human resource कहा था. So they started me asking around human resource, like what is leadership, transformational or transactional leadership style, and all these questions. And after that transformation, if you see the transformation starting from the basic questions that they ask, then they move to the subject content, and then they move to the research part, where they asked me that how you're gonna do this, and if you do not get the funds, will you be comfortable enough to change the project or your proposal or not. I believe why these kind of questions were asked, that because they want me to be more flexible with my work. Because as a PhD you cannot be rigid, you need to accept that you don't know everything, but it doesn't mean that you feel कि मुझे कुछ नहीं पता है. I have learned one thing in my PhD, that you are master of your thesis. No one knows your thesis better than you. First is you, then your guide, and then rest of the people. But
to be master of that particular thesis, you need to be flexible enough to understand the changes that has been made to improve your thesis, right? So this is how I started with the journey of my PhD in Shoolini University. This is how I started. And after this, there were again 3.5 years of struggle and all kind of things. So if you want to know more about it, then do tell me, then I'll tell you the whole process, step by step, every year how you do work and what are the things that you can include or exclude, or what are the mistakes. When I say include, what are the mistakes that you can avoid while doing your PhD, what I did and what I suggest you should not do. So with this, thank you, bye bye, take care, and do like, share and subscribe to my channel, and sayonara.